Okay. Adjective possessive, guys, to show possession for a particular object. This is my house. He's your father. She's my sister. So me, my, his, her is used as an adjective possessive. ठीक है, तो अगर masculine singular है तो हम यूज करेंगे more. Masculine singular. Words that begin with a vowel will also take masculine. Will also take this line. More. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, आपने कल ही लिखा है ही इज माई फादर या माई फादर नेम इज, सो हम क्या लगाते हैं? मो. फेमिनिन सिंगुलर के लिए वी यूज मा. एम ए. मा. एंड nouns with masculine or feminine plural, so whenever there is plural, जैसे आई थिंक हरप्रीत ने लिखा था that I have two brothers, mes frères. Okay, my brothers are intelligent, so mes frères sont intelligents. में प्लूरल. ऐसा ही चू के लिए है तो, ता, ते. योर अगर कोई मैस्कुलिन ऑब्जेक्ट है, योर अगर फेमिनिन है, योर अगर प्लूरल है. तो, ता, ते. नेक्स्ट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इल एल का जो लाइन है वो है सो, सा, से. सो, सा, से. ओके. सो, सा, से. सो मैस्कुलिन, सा फेमिनिन, से प्लूरल. देन नो, नो के लिए है नोत्र, नोत्र, नो. आवर, दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर फैमिली. ओके. नोत्र, नोत्र, नो. वो का है वोत्र, वोत्र, वो. वोत्र, वोत्र, वो. सो मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए वोत्र आएगा और प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए वो आएगा. और लास्ट वाला है लर, लर, लर्स. लर, लर, लर्स. सिंपल. Okay, this is the complete table of adjective possessive. Now, let's suppose सुक्कू बोल रहा है that she is my sister. तो हम कौन सा my sister के साथ क्या लगाएंगे guys? हाँ रेहान Ma, ट्राई. माँ. वाई सुक्कू बोल रहा है तो मैस्कुलिन ही लगाना चाहिए. it comes before the sister, right? It is, yes, it is basically, this masculine feminine plural is basically for the object which you are referring to. It doesn't matter if Rehan is saying or Harpreet is saying or Sukhu is saying. It doesn't matter. So subject matter नहीं करता. जिस object के लिए आप ये adjective लगा रहे हो, वो matter करता है. If the object is masculine, you will use masculine. If the object is feminine, you will use feminine. It doesn't matter what I am saying or what you are saying. Subject matter नहीं करता है. हम किसके लिए बोल रहे हैं वो matter करता है. So what we are going to do is equivalent form correct on others. We are going to do question number 13. इस बुक में अच्छी बात ये होती है कि this in the bracket it's already written feminine singular है, feminine singular है, क्या लगेगा. So you have to see, it becomes easy. So we have to do question number 13, question number 14. And then 17 कर लेंगे यहाँ पर. पहले क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करते थे, easier one. Try to look out for the meanings that are new to you. Okay, because this exercise is for practice but at the same time to learn new things, new vocab. So please do question number 13 and 14, guys. Please start.
Ma'am, Everyone, are you done? ma'am, here it's mentioned everywhere. It's mentioned like masculine singular, feminine singular, like that. So we don't know much French words, right? So what in Okay. case if we don't know any words? Is there any tricks to remember this? So obviously over here, so it's just मतलब यहाँ पर तो it is written, but normally Yeah. you will know like eventually, to be honest. Okay. Okay. Yeah, it will come to you with practice. For example, let's suppose the word is egg bowl. Egg bowl तो चलो feminine है, but we have seen some words like some common ones. Where? Where is a glass? Okay. Now it will Okay. come a lot when we are reading the book in Okay. unit 5. So you will remember, कि, oh, where is masculine? It is Okay. not feminine that way. Okay, guys. So if you're done with that, we'll do question number 17 also. Only 17 we have to do. And 16, 16, 17, and we'll discuss all four of them together. Okay. So please complete this.
Guys, is it done? Yeah, I'm almost done. Okay, Rehan, Harpreet. Yeah, almost. ठीक है, 2 minutes ले लो, complete कर लो, we'll start then. Okay, let's start. इसी से start करते हैं. Exercise 16 से. Dash papier s'il vous plaît. So we'll go 4 questions है. We have 3 people. Let's अभी के लिए एक question per person and then last exercise we'll see. So who you start? Should I tell all the four answers or single one? No, all of them. पूरा question All number of them. 16. Yes, Should I read the whole sentence? yes, yes. वो what is papier? वो papier. See, वो papier is poppy. plural ना. Yeah, Hmm. वो poppy. Next one. Votre passport. पूरा sentence read करो. So Okay, okay. JPO. je Votre pouvoir. JPO votre passport. Hmm. वो आवे Vous avez. vous avez votre permis de conduire, madame. Votre permis de conduire. What is the meaning? Driving license. Conduire Driving means to license. drive and permis means a license. So permis de conduire is a driving license. Okay. Autre carte the identity n'est plus valable. Very good. J'ai regretté. Hmm. Okay, next one. Vous pouvez, Hmm. Madonna. I'm confused. Is it autre or wo? This one. Os कर दो नहीं.
Okay. Feminine plural is also written. Coordonate coordinates your personal information. Okay. Okay. Yeah. Coordonate can include your phone number, email ID. So it's basically, if you go somewhere to inquire about something, you can simply ask, like we asked, na, can you please give Yeah. us their contact details, basically. So in French, we say, vous pouvez me donner vos coordonnées. Okay. C'est-à-dire votre adresse, C'est-à-dire, c'est-à-dire. We read it as c'est-à-dire, c'est-à-dire. c'est-à-dire हाँ, votre adresse et votre numéro de téléphone. very good. Last one. Posez, posez vos, is it right? Posez vos affaires Vos sur la affaires table, sur la table, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Very good. So, place your affair, मतलब place your things on the table, Okay. Okay. s'il vous plaît. Okay. Next, Rehan. Whole 17th one. हाँ जी. Okay. Moi, j'ai ma chambre. Pour moi, tout seul. Avec mon lit, Very good. mon armoire. Mon armoire. Very good. Très bien. Armoire. Anyone who has a confusion over here? Why it is mo and not ma? Because it's beginning with a vowel. And we read with vowels, no matter whether it's masculine or feminine, we are going to use masculine one only. So mon armoire. Very good, Rehan. Okay, continue. Mon armoire. Mes bureaux. Mm-hmm. Et Mo ma chaise. bureau. Mes vêtements, mon bureau. Mon bureau et ma chaise. Very good. J'ai tout mes affaires. Hmm. Mon imprimante. अरे mon ordinateur, laptop. Yeah. Ordinateur. Mon ordinateur. Hmm. Mhm. Mon imprimante. Very good. Uh, What is an mon tele imprimante? yeah, print. Printer. Yeah, printer. Hmm. Mon téléphone et ma Hmm. télévision. Très bien. All good. C'est moi, c'est différent. Mon frère et moi partagions en, Artajan. partagions en chambre. Il y a nous vêtements. Il y a mon Nous, armoire. no armoire. हाँ, नो armoire भी लिख सकते हो. Notre armoire. Uh, no vêtements. Very good. Hmm, Notre bureau Mm-hmm. Good. uh, est assez grand pour nous et nos livres Mm-hmm. No livre. sont sur la même étagère. Étagère. Étagère on the same Étagère. shelf. Okay.
nous, nous mettons nos affaires personnelles sous nos lits. No lid. No lee. Under our bed. No lid. Okay. Okay. Good work. Shreya, very good. किसी को कोई doubt? Anyone? Okay. Then let's move on to the previous questions. 13th. Harpreet, you start with the 13th one. Okay. जय परदू माँ वास्त ब्लू ए माँ On इशार Ishar. और Mon Ishar. मौ इशार ऑलेन जे वोद्रे कोनेत्र ता impression ता opinion sursi film Ton opinion and ton impression. Why? Because it's beginning with a vowel. prison. Okay. Yeah. Ton of impression, ton opinion, sursi film. Perfect. Zebu prison, ma Sior, Annie, A ma Emmy, Lucy. Mon ami again, beginning with a vowel. Okay, Mon Emmy, Lucy. Don Moe, Ta Asid. Ton Asiet, again beginning with a vowel. Okay. Don Ton Asid. moi. Il. Okay, just 1 minute. Don moi ton Asiet, give me your plate. Asiet means plate. Ele vid. It is empty. Okay, vid matlab empty. Vid means empty. Okay, continue. J'ai besoin de. J'ai besoin de ton aide pour la fête de mon école avec sa intelligence et sa volonté. Il va réussir. Okay, J'ai avec son dû- intelligence et sa volonté. Son intelligence, sa volonté. J'ai dû passer chez Catherine, mais je n'ai pas sa adresse. Tu peux me la donner. Very good. Okay, last वाला मैं कर देती हूँ. Qui m'a pris mon verre et où sont ma fourchette et mon couteau? Je n'ai plus rien. Je ne retrouve plus mes lunettes. Elles sont sur ses genoux, mamie. Passez-moi ton assiette et mette mon serviette. Stephanie, s'il te plaît. Yeah, because यहाँ पर s'il te plaît है, so we can say passez-moi ton assiette et mette tes serviettes. Mette ta serviette, Stephanie. Why I've used why I've used this What- to line? Because it's the. What does it mean, s'il te plaît? S'il te plaît means please. S'il vous plaît also please. S'il te plaît also please. S'il vous plaît is for the formal one. Who use होता है. S'il te plaît is informal one. Okay. Who is Pascal? Where is Pascal? Je ne sais pas. I don't know. मैं अब हम पास्कल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं उसके बारे में बोलूंगी. मैं son montant, sa casquette et ses clés sont là. But his coat, casquette and clay are there. Okay. So this adjective possessive is very important, everyone, in order to understand and make paragraphs and make sentences actually.
Even small sentences require good knowledge of adjective possessive. And that's why we have done it today. I hope it is clear to everyone. Tomorrow we are going to do prepositions. So come prepared. I hope this topic is clear. Do you have any doubts? This was a little difficult, तो like मतलब इसमें Yes. टाइम भी लगा थोड़ा समझने में एंड सॉल्व करने में भी, तो ये लाइक मतलब समझ तो आ गया है, बट शायद अभी के लिए शायद समझ आया हो, बाद में भूल भी जाए, तो लाइक हाउ डू यू ऐसा प्रैक्टिस टू होगा लाइक, हाँ रेहान, दिस विल हैपन कि अभी के लिए समझ आया और बाद में शायद आप भूल जाओगे व्हेन यू विल कम बैक. So हाँ as a एग्जैक्ट topic, my suggestion would be as a topic you should not forget it. Words आप भूल सकते हो, मतलब कि ये जो अभी हमने मीनिंग्स लर्न करके पता करे होंगे एक दो वर्ड्स, या मैंने भी बताए हाँ होंगे, वो आप भूल सकते हो. बट टॉपिक यू शुड नॉट forget. This topic is important and eventually actually you will not forget because we are going to do reading and writing ना. तो उसमें ये words use होते रहेंगे बार बार, मो मा तो ता, so that you will not forget. My personal suggestion would be जो हमने टेबल करा है एडजेक्टिव पोजेसिव का वो याद कर लेना. हाँ